Hello friends, uh, good evening. Today is 9th of January. This video will be in English, thoda Hindi, thoda English in terms of language. And in this video, we are going to cover stock selection or the TMPV strategy, trend, momentum, price action, volume. So this video is a series of part of series learn to use Rainbow series, and in that this is how you stock select. तो चलिए let's create the setup. So let's go to our list of stock. This is some of the lists. I selected some of the stocks. So to create the fountain of gold का जो setup है वो create करने के लिए हमें जाना होगा SD Rainbow Wave version 1. इसमें सिंस स्टॉक्स में सिलेक्ट स्टॉक्स का दो सेटअप है. ये stocks weekly and stocks less than week. So stocks weekly setup is important for stock selection and stocks less than week to be applied in daily chart for stock trading execution. So stock selection, let's put weekly, stocks weekly and apply. And उसके साथ हम लोग जो लेंगे वो है SDRSI X. And we will use regular. यहाँ पे जाके ऑटो करते ही चार्ट सेट हो जाएगा. ये निफ्टी दिखा रहा है. लेट्स कम डाउन टू सम ऑफ द स्टॉक्स. ट्राइडेंट, तो स्टॉक्स वीकली सेटअप व्हेन वी विल अप्लाई करते ही ऐसे दिखेगा ओवरऑल चार्ट विथ रेनबो वर्जन 1 एंड SDRSI X. स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इन वीकली चार्ट. दिस इज पार्ट ऑफ TMPV स्ट्रेटेजी दैट दिस स्टॉक रिमेन्स कि वो रहे कोई भी मिनिमम एक TMP फेज में. अगर ये कोई भी TMP फेज में नहीं है तो हम लोग इमीडिएटली उस स्टॉक को रिजेक्ट कर लेंगे. इट हैज टू बी रिमेन इन दिस TMP क्राइटेरिया एटलीस्ट वन. जब हम लोग बॉटम हंटिंग कर रहे हैं, स्टॉक ये फेज में है, से 29 में अराउंड 23rd एरिया, ये रेड डाउन ट्रेंड के बाद जब पहली बार एक फुल ग्रीन कैंडल आया है, व्हेन फर्स्ट टाइम अ फुल ग्रीन कैंडल इज अराइविंग with no background as red, it is for the first time it is ripe for buying if it is satisfying the pre-TMP criteria. ये फेज में प्री TMP क्राइटेरिया में द स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू सेटिस्फाई ये लेवल पे प्री TMP क्राइटेरिया हिट होगा. दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर बॉटम हंटिंग. जब ये येलो बैकग्राउंड से द स्टॉक गोज इनटू ग्रीन बैकग्राउंड, यहां पे जब ग्रीन बैकग्राउंड में चला जा रहा है तब ये TMP1 बुलिश क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. And when the stock price and the candle is moving, जैसे अभी beyond this orange or the long term line, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो लाइन ऑरेंज कलर का, this line, whenever the candle is above, that means it has moved to TMP2 bullish criteria. TMP2 bullish criteria में stocks moves very fast and gives quite a solid return. ये रहा. Once it breaks up, it gives a solid move. You can see the Bombay Stock Exchange. What kind of return it has come after the buying signal.
दिस इज अ बाई सिग्नल जो हम लोग फाउंटेन ऑफ गोल्ड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सेटअप 1, फाउंटेन ऑफ गोल्ड. Now this setup, first this is now satisfying at least two criteria, not the TMP2 bullish criteria. तो हमारे पोर्टफोलियो में एक टाइम पे 20 स्टॉक्स रह सकता है. 20 स्टॉक कैन रिमेन इन आवर पोर्टफोलियो. ऑफ दैट 10 to 15% can be in pre-TMP stocks, 30 to 35 can be TMP1, and majority preferred 50% to be in TMP2 phase. ऐसा होना चाहिए अपना पोर्टफोलियो. This is how our portfolio should be. Now, if we apply the TMP criteria, we'll still find lot of stocks. और स्टॉक्स हजारों स्टॉक्स हैं. उनमें से जिम स्टॉक्स हम लोगों को ढूंढना है, जैसे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो ब्यूटीफुल बाई सिग्नल आया है. तो ऐसा बाई सिग्नल तो बहुत सारे स्टॉक्स में आएंगे. सो फिल्टर आउट करने के लिए आई वी हैव एडेड 3 more criteria here, where it is stock strength score, RS status, and speed score. RS is relative strength. ये जब डिफॉल्ट में है, when it is in default, it is comparing RS with Nifty. You can change the RS index, that which one it should comply. Suppose आप TCS देख रहे हो, you are watching TCS, टाटा कंसल्टेंसी, एंड इट्स इनका RS जो है वो अभी है बियरिश. सपोज आप देखना चाहते हो कि ये आईटी सेक्टर CNX IT के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो CNX IT कंपैरिजन के साथ वो हो सकता है वो चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है वो सिमिलर बियरिश ही हो. बट ऐसे करके आप वहां पे चेंज डाल सकते हैं. ये आईटी सेक्टर के साथ भी बियरिश है, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, इट डिड नॉट चेंज. बट यू कैन सिलेक्ट, बट इन केसेस इट विल चेंज. सो आप ऐसे करके डाल सकते हो कि ओवरऑल विच इंडेक्स के साथ यू वांट टू सी द कंपैरिजन. डिफॉल्ट जो है दैट इज द निफ्टी. निफ्टी इज द डिफॉल्ट वन. So let's get back. ये रहा माधव. This is the Madhav marble and granite. It has really fired up. जब से stocks it has gone above TMP2 phase. So TMP2 का जो phase है उसमें run बहुत fast होता है. ये जो stock है ये देखिए अपना criteria beautifully satisfy कर रहा है. So our criteria फिर to select the stocks, we want at least one of the TMP phase, and we want stock strength score above 70, stocks relative strength as extreme bull, या तो speeding bull, या तो rising bull. We do not want fading bull, we do not want bearish, we do not want neutral. तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए अपना वॉच लिस्ट में रहने के लिए these criterias are important. At least one of the TMP phase, and these 3 criteria, speed score at least 10. और कोई स्टॉक में अगर वो है नहीं, सपोज दिस स्टॉक, इसमें तो अभी भी है. लेट्स सी इफ एनीवन स्टॉक इज मिसिंग वन ऑफ द क्राइटेरियाज. जैसे ये स्टॉक डीके इंटरप्राइजेस, तो इसमें आपको लग रहा है कि बाद में एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलना है. तो स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर देखिए, इट इज not 70, it is satisfying one of the TMP criteria, but stock strength score is 56. So continuous basis पे we do not need to watch charts. Simply alert center में जाइए, Alt A, SD Rainbow Wave version 1, और उसमें stock strength score greater than 70
ये अलर्ट लगा दीजिए एंड आपका काम खत्म ये चार्ट देखने का। So this is our selection criteria to remain a stock in our watch list. These are the mandatory criteria, at least one of the phase and minimum 70 RS status as rising bull, speeding bull or extreme bull, and stock speed score minimum has to be 10. So these three our selection criteria. उसके साथ और एक preferred criteria available है जिसके लिए you need the volume indicator. If you search simply SD volume, इसके लिए you don't need my permission, you can simply use it if you can find it. So if there is this green volume support, if there is this green zone basically means that big players are active in this stock. ये इसका मतलब ये नहीं कि ये green मतलब they are buying, they can also do selling. It basically means the green means the big players are in this stock and they might be doing something. And what something वो हमें पता चलता है ये कैंडल से। जैसे ये देखिए क्रीधन इंफ्रा, इट इज अ ग्रीन चालू हो गया इसमें एंड इट इज गोइंग अप। ये अपना जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग अप। दिस इज अ ब्रेक, फ्लैट जोन से ब्रेक हो रहा है मतलब इट हैज लॉस्ट स्ट्रेंथ बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक एंड वेरी लाइकली इट विल रीच हियर। So anywhere, somewhere, some big voluminous play is whenever happens, where big players presence very likely. जैसे अभी देखिए ऊपर जा रहा है, this is a new break in TRF, but the TRF this time big players are still not there. So this is another preferred criteria कि if we are getting lot of stocks which are good, we might look at where the big players are more active. सो दैट्स इट। ये वीडियो यहीं पे छोटा रख के खत्म करेंगे। इसके बाद जो दो है और सॉरी इसमें खत्म नहीं कर सकते, दो चीज बोलना बाकी रह गया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज स्टॉक अल्फा। उनको तो स्टॉक में रहना नहीं चाहिए इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न। ये वोलेटिलिटी है रिस्क। आप इंटर किए कोई स्टॉक, इट इज 8% डाउन, दैट इज वोलेटिलिटी। यू एंटर इन अ स्टॉक, इट इज अप 12% अप, दैट इज वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। अब आप बोल सकते हैं तो फिर इसको सर 10-12 लेते हैं। नो, द हायर द अल्फा ग्रेटर ऑल्सो द वोलेटिलिटी। तो ये ध्यान में रखना होगा, जितना हाई अल्फा हम लोग डिमांड करेंगे उतना ही वोलेटिलिटी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये जो बाकी नेक्स्ट जो बीटा है, स्टॉक बीटा, ये स्टॉक का जो मूवमेंट है वो निफ्टी ओरिजिनल मार्केट के साथ साथ उनका रिटर्न स्ट्रक्चर क्या है वो बता रहा है। सो ये स्टॉक बीटा अगर वेरी हाई है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, लेट्स सी, here the stock alpha is negative, but here no stock is currently not there which has a very high beta. These are largely negative beta or low beta stocks. So I think somewhere later on we will find some stocks where beta are very high. That means if the beta is 3, that means if Nifty is moving by 1%, if it falls by 1%, the stock can drop 3%. So 3% or more. So this beta is very helpful in managing the overall risk of our portfolio and to hedge our portfolio with, अगर हम पुट से हेज करना चाहे निफ्टी 50 का, तो उनकी निफ्टी 50 के साथ ओवरऑल बीटा कैलकुलेट करके वी कैन डिटरमाइन हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू डू अ बेटर हेजिंग। तो यही दो लास्ट दो पॉइंट था, अल्फा एंड बीटा, बट ये दो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट वी डू नॉट वांट अ नेगेटिव अल्फा स्टॉक। जैसा अभी ये अल्फा इज नेगेटिव,
We do not want a stock which is having a negative alpha. So chaliye, thank you so much for watching this till the end. If you are watching, all the best from my side. Don't forget to like and subscribe.